Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 8th of May. The session will be quite interesting students. We will be talking about Operation Sindoor, right? And apart from this we will be talking about first edition of Waves. Then we will be talking about recently Ram Mohan Naidu has granted in principle approval for the greenfield airports in Rajasthan and Odisha. Next thing we will be talking about Ganga rejuvenation, and we will be talking about inland waterways logistic movement system, right? Various agreements has been signed here. All these things and many more will be discussed here students, so stay tuned with us till the end. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. If you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Let's start with national affairs. We are talking about the first edition of Waves 2025. This was held in Mumbai. What is Waves? World Audio Visual and Entertainment Summit. Where was this held? Location. This was held at Geo World Convention Center in Mumbai, Maharashtra. Right, this was a 4-day long event organized by Ministry of Information and Broadcasting, right, and it was held from 1st to 4th of May. There is a theme also for this summit, that is connecting creators, connecting countries. I repeat, connecting creators, connecting countries. This is the tagline or the theme under which this first edition of the Waves 2025 was held at Geo World Convention Center in Mumbai, Maharashtra. Right, important. Also, this summit was concluded with remarkable success with transaction more than 1300 crore rupees. Next, if we talk about this here, one more thing, remember, Prime Minister Narendra Modi has released a commemorative stamp honoring the icons, honoring the Indian cinema, right? And a special postage stamp to honor 5 great personalities of the Indian cinema was launched here. Moving on, next we talk about Waves Bazaar. The summit also featured Waves Bazaar. This is a global e-marketplace with over 6100 buyers, 5200 sellers and 2100 projects that are designed to connect buyers and sellers locally and globally. Next news is Ram Mohan Naidu has recently granted in principle approval for Greenfield Airport in Rajasthan and Odisha. First thing, if we talk about the strike that was carried out by India, right, in Pakistan, what was it named? It was named Operation Sindoor, right? It was carried out late at night on 7th of May, right? And we know that on 7th of May, nationwide drills has also been talked about. So coming back to this news, Ram Mohan Naidu has granted in principle approval for Greenfield Airport in Rajasthan and the state of Odisha. Correct? And they will be coming under UDAN, that is Ude Desh Ka Aam Nagrik, that aims to make air travel affordable and accessible to the common man. These two projects will be developed in various phases of 1500 crore rupees each. Then further they will be further seeing an investment where these airports will be developed. Next news is about NMCG, that is National Mission for Clean Ganga, has approved key projects for Ganga rejuvenation in the 62nd EC meeting in New Delhi. What is this EC? Executive Committee meeting, right? This was the 62nd Executive Committee meeting held in New Delhi, during which these projects were approved, right? They include conservation for wetland, right? Let me show you, right? This is your Executive Committee has approved the conserving and sustainably managing the Nathampul Bhagad wetland, that is in Bhojpur district of Bihar, with a cost of 3.51 crore rupees. EC has also approved funding a total of 34.5 lakh rupees for capacity building initiatives for making water sensitive cities in the Ganga Basin project. Right, so these two things remember, and we know that cleaning of the river has been started. Also, it is even in we talk about Yamuna river, right? It is was told that once Yamuna is clean, cruise tourism will be established in Yamuna river. Next, if we talk about Namami Gange program, this was launched by the Government of India in 2014. That was a flagship program with a total budget of 20,000 crore rupees. Moving on, next we are talking about Government of India. They are giving boost to the inland waterways. How these inland waterways will be benefiting us, as they will help in the logistic movement of cargoes, right? With this, the logistic will go down, and you will be seeing that as the trade will flourish here.
Correct. So take a note of this. Government is giving boost here to the inland waterways for logistic movement. Right. For this you will be seeing this Rhenus Group. Right. This is the one of the major global logistics company. This is from Germany. So they have recently partnered with them to boost the inland waterways sector of India. This partnership will strengthen the intricate global best practices that will be implemented in the Indian inland waterways, right? The important and the new technologies that are being implemented globally. Moving on, next, Ministry of Road Transport and Highways has rolled out the cashless treatment scheme 2025 for road accident. In case of any road accident, right, the victims here will be treated cashless, right? They will be the hospitals will not be taking any cash from the victim. This guidelines has been released by Ministry of Road Transport and Highways, and under which they will be entitled to cash treatment of up to 1.5 lakh rupees per accident per person. This scheme will be starting from 5th of May 2025, and to support the nationwide rollout of this scheme, the government has also allocated 272 crore rupees for the financial year 26 FY26. Next is Tamil Nadu has topped the India's textile export in FY25 with $7.99 billion contribution. I repeat, it is Tamil Nadu that has emerged as the India's leading textile exporter in FY25, which are contributing $7.99 billion, which accounts for almost 26.81% of the India's total textile export value at $36.61 billion. If we look at some of the key export categories, the ready-made garments, the largest share, that is at 15.99 billion, cotton products $12.06 billion, man-made textile $4.87 billion, other includes your handicraft, carpet, jute and many more. Right, as we know, it is Tamil Nadu that secured the first position. Then on second is Gujarat, that has ranked the second largest textile exporter with $5.64 billion, followed by Maharashtra on the third position with $3.83 billion of export. If we talk about Tamil Nadu, who is the Chief Minister of Tamil Nadu? M.K. Stalin, and capital is Chennai here. Next is UNDP HDI 2025 was held, and India has climbed 3 steps to 130 here. UNDP, United Nations Development Program, they have released a report HDR, that is Human Development Report, and with this report our country is standing at 130th position in the Human Development Index. Which is the country that secured the first position? It is Iceland that has secured the top position in this Human Development Index. According to the data here, the India's life expectancy rose from 58.6 years in 1990 to 72 years in 2023. If we talk about United Nations, who is the administrator of United Nations? Akim Steiner, headquartered in New York, USA, and established in 1965. Moving on, next is SEBI. SEBI has set 1 crore rupees minimum investment and mandatory demat for securitized debt instruments. I repeat, recently a data was released by SEBI recently, and this is for the threshold or the ticket size will be here 1 crore rupees for the issuance of SDI, that is your securitized debt instruments for RBI regulated originators and unregulated entities. It is now mandatory to have at least 3 years operating experience for the originators, and these new norms are aiming at ensuring that originators they maintain interest in underlying asset, they promote market stability and investor confidence. Also, as per the SEBI's rule, the public offer for these SDIs will remain open for at least 3 days and a maximum of 10 days. Apart from this, SEBI has also introduced investor charter, right, for KYC registration agencies. Correct. So this investor charter has been launched for the KYC registered agencies or KYC registration agencies. Next is Haryana cabinet has approved 474 crore rupees AI development projects recently. Right, these projects will be implemented in Haryana, and it is World Bank along with which they have partnered here for the next 3 years, that is from 2025 to 2028, where Haryana government and World Bank they will be collaborating and enhancing the AI development projects in the state. Also, this project has been funded 70-30, that means 70 it will be funded by World Bank and 30 it will be funded by Haryana. Next
Next is SBI has projected retail inflation below 3% in the first quarter of FY26. The projection follows a significant decline to 3.34 in the March 2025, marking, because we saw this data recently, right? So we are expecting that further it will go down to 3% in the first quarter of FY26. Next is awards and winners here, recognition, students. We are talking about Pulitzer Prize, right? So recently the board of Pulitzer Prize has announced 109th edition of Pulitzer Prize winners 2025. That includes your Pulitzer Prize is basically given in the field of journalism, book, drama, music, and special science, right? And here currently Pulitzer Prize is presented in 24 categories, correct? And recently renowned American photographer Doug Mills has won the category of the breaking news photography, right? Remember his name. Next is, apart from this, other winners you can go to the PDF, students, and go through them. Next is renowned entrepreneur social activist Dr. Mustafa Yusuf Ali Gom has been conferred with the International Buddha Peace Award 2025. This award is basically given, correct, for his exceptional social activism and leadership in the building repairs and the restoration of the industry there, and for his efforts he was honored here with this International Buddha Peace Award for 2025. Correct, take a note of this, students. And he is a social reform renowned social worker and entrepreneur from Mumbai, Maharashtra. Next is, apart from this, remember, other than Dr. Mustafa, eminent structural engineer Dr. Munir Khan, the founder of Avon Consulting Engineers, was also bestowed with the award in recognition of his outstanding contribution to social initiatives promoting sustainable development and community welfare. Next is Union Minister L. Murugan has been conferred with the 10th edition of the National Community Radio Awards in Mumbai, Maharashtra. I repeat, Dr. L. Murugan, right? He's our Union Minister of Ministry of Information and Broadcasting, and he honored 12 outstanding community radio stations with the 10th edition of the National Community Radio Awards, the event for which was held at Geo World Convention Center in Mumbai, Maharashtra. Correct? Next is, these are the categories here, and first is your thematic category. 4 categories were awarded here. In thematic category, it is Radio Mayur of Mayur Kala Kendra in Bihar secured the top position for Tech Sakhi. Then other categories include your thematic category. Then comes your most innovative community engagement award, promoting local culture award, and the fourth is your sustainability model. Moving on, Friedrich Merz became the Germany's 10th chancellor. As you can see him in the picture here, right? He became the 10th chancellor of Germany. He secured majority with 325 votes out of 630 in the second round of the voting here, right? And Merz is the first chancellor, right, to lose to Bundestag vote since Germany's independence. But remember, now he became the 10th chancellor of Germany. Next is Prakash Magdum appointed as the managing director of NFDC. NFDC was what it is? It is your National Film Development Corporation. This is a CPSE under the Ministry of Information and Broadcasting. And here Prakash Magdum, he will be succeeding Prithul Kumar, who served as the previous MD of NFDC. Next is acquisitions and mergers. AMSL has acquired Ideal Explosive for 107 crore to strengthen the defense manufacturing. I repeat, Hyderabad, Telangana based Apollo Microsystems Limited, through their wholly owned subsidiary Apollo Defense Industries Private Limited, they have signed a share purchase agreement to acquire 100% equity stake in Ideal Explosive Limited from Hyderabad based GOCL Corporation Limited as a part of Hinduja Group for a total consideration of 107 crore rupees. Then next comes DRDO, and Indian Navy has successfully tested the indigenously developed MIGM. What is MIGM? Multi-influence ground mine. Correct. So it is DRDO and Indian Navy. They together tested this indigenously, means made in India developed MIGM. This MIGM system aims to enhance Indian Navy's defense against modern stealth ships, submarines, and offer advanced detection and engagement capabilities. Next is your sports, students. Indian table tennis duo has clinched under 19 boys double title at the World Table Tennis Youth Star Contender Bangkok 2025, right? And in the under 19 girls double, India's Cinderella Das and Divyanshi Bomchik, they won together silver here in the under 19 girls. And in under 19 boys,
Indian table tennis duo, right? They are Ankur Bhattacharya and Abhinand Pradhivind, right? They have recently won the under 19 boys double title here. Next is Football Club Goa has won Kalinga Super Cup 2025 by defeating Jamshedpur Football Club in the final, and they have secured their second title in the tournament's history. Very important, take a note of this, direct question can be asked. And where was the final held? In Bhubaneswar, in the Kalinga Stadium in Bhubaneswar, Odisha. Next is important day, students. International No Diet Day observed on 6th of May. This is observed globally to promote the body acceptance, challenge diet culture, and raise awareness about the dangers of weight discrimination and fat phobia. Light blue ribbon is the symbol here for this. Next is World Asthma Day observed on 6th of May. This day is observed generally on the first Tuesday of the May month, and it is a global initiative led by Global Initiative for Asthma to raise awareness about asthma and improve its care. First time this day was observed. This day was observed on 2025, as it is the first Tuesday of May. In 2025 it was 6th of May, and the theme here being make inhaled treatment accessible for all. This is the theme here. Next is Border Roads Organization Raising Day observed on 7th of May, and this day is observed basically to raise awareness about BRO that was established in 1960 to honor and basically honor the dedicated service of the BRO personals. This day is observed, and this year it was the 66th observance of this BRO day. Next is World Athletics Day observed on 7th of May. It is to raise awareness among children and young people about the importance of fitness and encourage them to play sports. And there is a theme here, students. Relay around the world challenge is the theme here for this World Athletics Day. Students, that's all for the day. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning, and then we'll proceed to the homework section. Next, identify the organization that extended a 2000 crore rupees loan to Gramercy Tech Park Private Limited for establishment of 120 megawatt data center in Maharashtra. It is National Bank for Financing Infrastructure and Development, and this will be worth 120 megawatt data center in Maharashtra. Next, in Feb, Beacon launched India Bill Pay, a service that allows the non-resident Indians in Canada to pay bills directly in India through the Beacon Money application. Next, and one more thing, remember, similarly, if we say in order to enhance the usage of UPI in Singapore, the company from Singapore that has partnered with NIPL, that is National International NPCI International Payment Limited, is your HitPay, is from Singapore. Next, RBI revealed that its digital payment index has increased to 465.33, reflecting a 11.11% year-on growth as of September 2024. Next, what are the new norms introduced by SEBI in Feb 25 to regulate the algorithmic trading for retail investors set to take effect from? It will be coming into effect from 1st of August 2025. Next, which of the following states recently secured 2,424.28 crore rupees from the World Bank to improve the living standards? It is Kerala state. Next, which bank launched an exclusive set of banking products and services specifically for senior citizens in Feb 2025? It is IDFC First Bank. Next, identify the new health insurance product that was launched by Bajaj Allianz General Insurance, designed exclusively to cater to the evolving healthcare requirements of the women. It is Horizon Care, right? Take a note of this. Next, how much net profit of State Bank India reported for the third quarter of FY25, marking an 84.32% year-on-year increase. It is 16,891 crore rupees. Next is which company launched two new fund offers in Feb 25, including the Nifty Total Market ETF and Nifty Total Market Index Fund to monitor the performance of Nifty Total Market Total Return Index. So, which company launched them? It was launched by Angel One Asset Management Company. Next, identify the organization that recently granted a third-party application provider license, that is TPAP license, to Rediff.com India for their digital payment platform Rediff Pay.
So, what is the organization that granted this TPAP license? It is National Payment Corporation of India, NPCI. Next, in Feb, RBI imposed a monetary penalty of 27.3 lakh rupees. It was on Federal Bank for not complying with the RBI's direction on interest rate deposits and opening saving deposit accounts for ineligible entities. Next, identify the digital platform that was recently launched by the SEBI to help investors track and reclaim inactive and unclaimed mutual fund portfolios. It is Mitra, right? Take a note of this. This is the name of the platform that was launched, a digital platform where the investors can go and reclaim the inactive or unclaimed mutual fund portfolios. Next, which of the following was recently granted approval by RBI to provide pre-sanctioned credit lines through the UPI? It is your which of the following has granted approval? So it was small finance banks, right? They were granted approval by RBI to provide pre-sanctioned credit lines through UPI. Next, which first of the kind feature was recently launched by Axis Bank, enabling the customers to open them via their mobile application? Right? It is your fixed deposit feature that has been bought by them. Next, identify the company that recently received the approval from RBI to operate as an online payment aggregator. So, it is your EasyBiz Private Limited. They recently got the approval from RBI to operate as an online payment aggregator. Next, name the hydroelectric project in Jammu and Kashmir that received 2147.51 crore rupees term loan from REC Limited in collaboration with Chenab Valley Power Project Limited for the development and construction. It is which dam? It is Pakul Dam. Next, mention the organization that recently launched India's first dedicated platform related party transaction portal to monitor and analyze the RPTs and enhance transparency and governance in the corporate India. It is SEBI, Securities and Exchange Board of India. Next, in Feb, Dash received the restrictions from RBI to issue new loans and suspended deposits withdrawals due to the concerns about the financial position. It is New India Cooperative Bank Limited. They have received the restrictions from RBI to issue new loans and suspended deposits withdrawals due to the concerns about their financial portfolios. Next, identify the bank on which the RBI lifted restrictions on in February, allowing it to onboard new customers digitally and issue the new credit cards. So, which is that bank? It is Kotak Mahindra Bank Limited. Next, Zulia Investment Private Limited. They recently received the approval from RBI to raise their stake to 7% in AU Small Finance Bank. Next, name the organization that invested 850 crore rupees in India's first sustainability linked bond in the road sector in Feb 25 issued by Cube Highways Trust. So name that organization. It is your International Finance Corporation, IFC. This is an arm of World Bank only. Next, mention the country that recently secured $300 million line of credit from Export and Import Bank of India for purchasing high-speed boats and offshore patrol vessels. It is Vietnam. Next, which fintech infrastructure platform introduced India's first fully compliant self-hosted central KYC solution, Know Your Customer solution? It is Decentro Tech Private Limited. Next, name the new digital service launched by South Indian Bank in Feb 25 which allow the individuals to open fixed deposits without saving account. It is SIB Quick Fixed Deposit. Next, identify the initiative that was introduced by Insurance Regulatory and Development Authority of India during the 9th edition of Bima Manthan to enhance accessibility, affordability and efficiency of the insurance services in India. That is your Bima Trinity. Next, when will the SEBI new disclosure rule for related party transactions come into effect from? So SEBI's these news for the related party transactions will be coming into effect from 1st of April 2025. Next, identify the digital service platform launched by LIC in Feb 25 to empower its agents and sales associates. It is One Man Office. Next, what is the denomination of the commemorative coin released by Karnataka Bank Limited on its 101st Founders Day in Feb 2025?
2025. It is 100 rupees of commemorative coin. Next, name the new payment mechanism introduced by IRDAI in Feb 25, allowing one-time payment or one-time mandate on UPI for insurance companies. So name that payment mechanism. It is Bima application supported by blocked accounts. That is Bima ASBA. Next, which Indian private sector bank has launched the Prospera non-resident external saving account for non-resident Indians, persons of Indian origin and overseas citizens of India in Feb 25. So which is that Indian private sector bank? It is your Federal Bank. Next, according to RBI's data, outward remittance under the liberalized remittance scheme declined by 10.15% year on year to what amount during the 9 months of FY25? So it is to $22.82 billion. Next, Department of Horticulture and Food Processing under the government of Uttarakhand signed the records of discussions for a 4-year technical cooperation project in Feb 25. With whom? It was with the Japan International Cooperation Agency, that is JICA, to enhance the horticulture production. Next is this is your homework question, students, and I want to see maximum participation from all the students watching this. Students, let's discuss some one-liners. Let's start with national news. India, Mauritius, they have signed 8 MOUs to bolster strategic economic relations. Then India and Chile's first joint working group meeting on agriculture was held recently. PM Modi handed over the overseas citizen card to Mauritius counterpart. Then government launched $1 billion fund for the creators economy ahead of the Waves 25. Then Patel inaugurated the Water Sustainability Conference 2025 and PB Shabd, that is a free subscription, has been extended till 2026 to support the media organizations. Next thing is the 10th edition of the Raisina Dialogue held in New Delhi, inaugurated by PM Modi. Then Fit India Carnival held in New Delhi, inaugurated by Mansukh Mandviya. And CCI has approved the acquisition of Uprising Science Private Limited by Hindustan Unilever Limited, that is HUL. Then Meghalaya inaugurated the first scientific coal mine after nearly a decade-long ban on that. Next is banking and finance. Valuetics Reinsurance set to become India's first private reinsurer. Then India to become the world's third largest economy by 2028 as per the data released by Morgan Stanley. We will be surpassing whom? We will be surpassing Germany. Then Yes Bank launches seamless GST payment facility for businesses and individuals. Infibeam has partnered with Sutex Cooperative Bank for enhancing net banking facility. Standard Chartered has raised €1 billion via first social bond. Then Piramal Finance and Punjab and Sindh Bank, they have joined hand to expand the credit access to the MSMEs. Then Satya Micro Capital, they have unveiled the bold vision to empower 10 million households by 2030. And HDFC Bank, they are now accepting deposits under Senior Citizen Savings Scheme. Next is wholesale price inflation, that is WPI. It has risen by 38% in the month of Feb 2025. Next is appointments and resignation. Shiv Kumar Kalyanaram assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then I repeat, Shiv Kumar Kalyanaraman, right, assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then Stuart Young to be sworn in as the new Prime Minister of Trinidad and Tobago. Then Tractors and Farm Equipments Limited, that is TAFE, has been appointed as the Lakshmi Venu as their new chairman. Then Vikas Kaushal takes charge as the HPCL chairman and managing director, who has been appointed as new MD and CEO of Bajaj Auto, Rajiv Bajaj. Then RBI has named Indranil Bhattacharya as the new executive director. And Mithili Balasubramaniam named the interim managing director and CEO of Eldevis ARC, that is your asset reconstruction company. Next is awards. RBI awarded Digital Transformation Award 2025 for digital initiatives. Then Bengaluru Airport has won the Air Service Quality Award for the third year consecutively. Next is hydrologist Gunter Bloschel has won the 2025 Stockholm Water Prize. Sustainable Airy Silk from Northeast secure the global recognition with Ecotex certification that is given by the country Germany. Next is Wheaton sculpture Ram Sutar chosen for Maharashtra Bhushan Award 2024. Next is related to sports. Jharkhand crowned 15th Hockey India Senior Women's National Championship.
right? So 15th edition of Hockey India Senior Women National Championship, who is it? Jharkhand. Then India Masters has beaten West Indies Masters by 6 wickets to clinch the International Masters League T20 title. Then Kabaddi World Cup 2025 began in England, and India concluded Special Olympics Winter Games with 33 medals. IOC board has approved boxing for inclusion in the 2028 Los Angeles Olympic Games, and India has secured 33 medals at the Special Olympic Winter Games 2025. Australian Grand Prix 25 was held, and McLaren's Lando Norris has won the F1 season opener, and India to host the 11th Asian Swimming Championship in Ahmedabad. So these were your important one-liner, students. Now let's move to some other MCQ questions. Next, students, let's move to the homework section. First question, tell me recently which is the first state to subcategorize the SC category. It was categorized into 3 groups. Name that groups and their criteria also. Second question, recently Bhu Bharti portal. Bhu Bharti portal. This Bhu Bharti portal was launched by which state government? Third question, tell me recently which Indian Institute of Management which Indian Institute of Management has opened their campus in Dubai recently. Also tell me if there is an IIT that has also opened in Dubai. It is not recent news, but still you should know. Fourth question, world's best airport. Name the world's best airport and also the rank of Indian airports in this list. Fifth question, tell me recently about International Solar Alliance, how many members are there and who was the recent joining. So that's all for the day, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video in the homework, right? Maximum to maximum comments I want. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 8 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट एडिशन ऑफ वेव समिट की, जो कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुई। देन हम बात करेंगे अभी रिसेंटली ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को अप्रूवल मिल गया राजस्थान एंड उड़ीसा में। देन गंगा रेजुविनेशन के ऊपर हम बात करेंगे, एंड इनलैंड वाटरवेज को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसके लिए अभी एक रेनेसिस ग्रुप, ये जर्मनी की कंपनी है, इनके साथ टाई अप किया गया, एक अग्रीमेंट साइन किया गया कि लॉजिस्टिक सेक्टर में हम कैसे इनलैंड वाटरवेज को बढ़ावा दे सकें। तो इन चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एंड मैनी मोर इस न्यूज़ वीडियो में रहेंगी काफ़ी न्यूज़ जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी स्टूडेंट्स। इसी के अलावा स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। ये वीडियो ज़रूर देखा करो, ये आपकी लर्निंग में बहुत बेनिफिशियल होती है। सुबह उठते ही सबसे पहले ये वीडियो देखा करो। देन इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप नहीं जुड़े हमारे साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। हम बात करेंगे पहले एडिशन ऑफ वेव समिट की। वेव होता क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये हुआ कहाँ पर था? पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में ये हमें देखने को मिला था। ये आपका 4 दिन लंबा इवेंट था, 1 से लेके 4 मई तक ये इवेंट हुआ था। एंड कराया किसके द्वारा जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया। इस इवेंट की फर्स्ट वेव ऑफ या फिर फर्स्ट एडिशन ऑफ वेव समिट की एक टैगलाइन कहीं या फिर थीम कहीं, वो थी कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, राइट। इसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे
इस समिट के दौरान यहाँ पे कमेमोरेटिव स्टैम्प भी लॉन्च किया था। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। पहली चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, मार्क करके चलेंगे इसको। एंड 77 कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे कुछ साइन किए गए डील। इसी के अलावा वेव्स वाज कंक्लूडेड विद 1328 करोड़ रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमें देखने को मिली यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है एक वेव्स बाजार भी यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, राइट। ये ग्लोबल ई मार्केट प्लेस है जहाँ पर 6100 बायर्स, 5200 सेलर्स, 2100 प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो कि बायर्स एंड सेलर्स को लोकली एंड ग्लोबली कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी, इन्होंने ग्रांट किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि राजस्थान में एंड ओडिशा में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। टेक अ नोट ऑफ दिस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ अप्रूव किया गया है। राजस्थान एंड ओडिशा में इनको अप्रूव किया गया है अंडर उड़ान इनिशिएटिव, उड़े देश का आम नागरिक इनिशिएटिव, राइट। जो क्या है, बेसिकली एयर ट्रेवल को अफोर्डेबल बनाना है एक कॉमन मैन के लिए, राइट। एंड फेसेस में जैसे जैसे लैंड एक्वायर होगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, वो यहाँ पे शुरू होते हुए दिखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन्होंने अप्रूव किए की प्रोजेक्ट्स फॉर गंगा रेजुविनेशन इन द 62nd एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। तो 62वीं एडिशन था इस एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग का। पहली चीज ये कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में हुई। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर हुई, राजीव कुमार मित्तल जी जो कि डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, इनकी चेयरमैनशिप के अंडर हुई, राइट। यहाँ पे एम क्या है कि गंगा को साफ करना है, गंगा को रेजुविनेट करना है, राइट। एंड इसी के अंडर हम देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स है, जैसे इसी ने, इस एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अप्रूव किया कंजर्विंग एंड सस्टेनेबली मैनेजिंग वेटलैंड जो कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ बिहार के। 3.5 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करने की बात की गई। इसी के अलावा इसी ने अप्रूव किया फंडिंग ऑफ 34.5 लाख रुपए फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स फॉर वाटर सेंसिटिव सिटीज इन द गंगा बेसिन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट अगर हम नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करें, 2014 में फ्लैगशिप प्रोग्राम था, 20,000 करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने बूस्ट दिया इनलैंड वाटरवेज को फॉर लॉजिस्टिक मूवमेंट, साइंस अग्रीमेंट विद रेनेसिस ग्रुप। ये जर्मनी की कंपनी है, इनके साथ यहाँ पे ये टाई अप किया है ताकि इंडिया का जो इनलैंड वाटरवेज है, राइट, उसको बेटर कर सके। उसको बेटर करने से क्या होगा, हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगा तो जो एंड प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पे चीप मिल सकता है लोगों को, या फिर यहाँ पे जो बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर हैं उनका यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है, राइट, मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। तो लॉजिस्टिक्स को कम करने के लिए इनलैंड वाटरवेज को बूस्ट दिया जा रहा है, नया एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे इस इनलैंड वाटरवेज को ग्रो किया जाएगा, करेक्ट। एंड गवर्नमेंट भी काफ़ी सहयोग कर रही है यहाँ पे इन इनलैंड वाटरवेज को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन्होंने रोल आउट किया कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 के लिए फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। जिनका रोड एक्सीडेंट में विक्टिम है, जो जिनकी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनका यहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट होगा हॉस्पिटल में। 1.5 लाख रुपए पर विक्टिम पर एक्सीडेंट यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं सरकार के द्वारा, राइट। टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं, तमिलनाडु ने भी टॉप किया इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इन FY25 विद $7.99 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता हुआ दिखा। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट आ जाता है, टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 36.61 बिलियन का, राइट। तमिलनाडु ने यहाँ पे टॉप किया। गुजरात सेकेंड पोजिशन पे आ जाता है विद $5.64 बिलियन एंड इसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है विद $3.83 बिलियन। ठीक, फिर इसी के अलावा आप देख सकते हैं रेडीमेड गारमेंट्स कितना शेयर है, इसका लार्जेस्ट शेयर, कॉटन प्रोडक्ट का कितना, मैनमेड टेक्सटाइल का, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, जूट्स एक्सेट्रा। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं PN विजयन, सॉरी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन एंड यहाँ पे कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु। इंटरनेशनल न्यूज़ पर आते हैं स्टूडेंट्स। फिर यूनाइटेड नेशन का HDR रिपोर्ट रिलीज़ की गई। HDR क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की रिलीज़ की गई है। एंड इंडिया ने क्लाइम किया 3 स्टेप्स टू 130 एंड आइसलैंड ने यहाँ पे टॉप किया है इन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, या फिर हम बोले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया 130th पोजीशन पे आया है, जहाँ पे आइसलैंड ने सिक्योर किया टॉप पोजीशन। अगर इंडिया में ही हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें इस रिपोर्ट के हिसाब से 58.6 ईयर्स से बढ़ के 1990 से आज 72 साल हो गई है 2023 में। UNDP की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनके
एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहेंगे? अकीम स्टेनर। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में रहेगा एंड 1965 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, सेबी ने अभी कट किया 1 करोड़ रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी डीमेट फॉर सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। एसडीआईज में अगर इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 1 करोड़ रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई। ये क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है सेबी के द्वारा। 5 मई से ये लागू हो जाएगा एंड नाउ इट इज़ मैंडेटरी कि कोई भी इट इज़ मैंडेटरी टू हैव 3 years ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर दीज ऑरिजिनेटर्स, राइट। एंड सेबी के द्वारा यहाँ पे ये नए रूल्स लाए गए हैं एंड ये जो एसडीआई है जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल रहेगा। 3 से लेकर 10 दिन तक ये यहाँ पे अवेलेबल हमें देखने को मिलेगा एंड जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड है, राइट, वो अब 1 करोड़ का हो गया है यहाँ पर। इसी के अलावा सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया इन्वेस्टर चार्टर। ये बेसिकली केवाईसी करने वाली जो रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं, राइट, उनके लिए यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं हरियाणा की कैबिनेट ने 474 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे अलोकेट किए एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एंड यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके ये यहाँ पे एआई को डेवलप करने का काम करेंगे। नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आएंगे जिसमें जो फंडिंग है 70 की रहेगी। 70 फंड करेगा वर्ल्ड बैंक एंड 30 फंड किया जाएगा 30% बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 3% का रहेगा। एज ऑफ नाउ अगर हम देखें जो इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन था वो 3.34% हमें देखने को मिला है मार्च 2025 में, जो कि गिरता हुआ दिखा है एंड बात की जा रही है कि फर्दर फर्स्ट क्वार्टर में ऑफ FY26 ये 3% तक पहुँच जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स पुलित्जर प्राइज, जनरली जर्नलिज्म में ये अवार्ड दिया जाता है एंड एनवाईटी इन्होंने जीते 4 रूटर्स विन फॉर यूएस फेंटेलिनी इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे पुलित्जर प्राइज बोर्ड के द्वारा ये 109वां एडिशन ऑफ पुलित्जर अवार्ड दिया गया, राइट। 24 कैटेगरीज में दिए जाते हैं जिसमें से जर्नलिज्म, बुक्स, ड्रामा, म्यूजिक ये रहता है। एक इंपॉर्टेंट इनमें से याद रखेंगे डग मिगलेस, राइट, एनवाईटी इन्होंने जीता द कैटेगरी ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी को, राइट। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, वो आप PDF के थ्रू रेफर करना। PDF में हमने सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर रिनोन्ड एंटरप्रेन्योर सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गौम, इनको कन्फर किया गया इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड 2025 से, राइट। पीस को प्रमोट करने के लिए, सोशल एक्टिविज्म को प्रमोट करने के लिए, राइट, एंड इनके जो लीडरशिप रोल रहा है सोशल एक्टिविज्म को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड से। टेक अ नोट ऑफ दिस। इनके अलावा डॉक्टर मुनीर खान को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया जो कि फाउंडर हैं एवन कंसल्टिंग इंजीनियर्स के, राइट, जिनको इसके लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर एल मुरुगन, इनको कन्फर किया गया 10वें नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड से इन मुंबई, राइट। इन्होंने कन्फर किया है 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स। 12 आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित करा गया, राइट, ड्यूरिंग अ समिट जो कि कहाँ पर हुई थी, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुई थी, वेव्स के समिट के दौरान ही। मूविंग ऑन, एंड ये जो आप यहाँ पे प्राइज भी हैं आप ये देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 कैटेगरीज में दिए गए हैं। थीमेटिक अवार्ड्स में पहला प्राइज रहा रेडियो मयूर का ऑफ काला केंद्र इन बिहार फॉर टेक सखी, राइट। फिर थीमेटिक अवार्ड्स के अलावा जाता है मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट अवार्ड, फिर आ जाता है प्रमोटिंग लोकल कल्चर अवार्ड, इसके बाद आ जाता है सस्टेनेबिलिटी मॉडल एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेडरिच मर्स, ये जर्मनी के 10th चांसलर बन गए हैं, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रकाश मखदूम, इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NFDC। NFDC क्या है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एक CPSE है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये सक्सीड करेंगे पृथुल कुमार को, हु सर्व्ड एज द प्रीवियस मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NFDC। इसके बाद आ जाते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पर। AMSL अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड थ्रू देयर होली ओन्ड सब्सिडरी अपोलो डिफेंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने शेयर परचेज अग्रीमेंट साइन किया जहां पर ये 100% स्टेक एक्वायर करेंगे आइडियल एक्सप्लोजिव लिमिटेड में, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड 107 करोड़ की लागत से ये यहाँ पे 100% एक्वायर करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं DRDO एंड इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिजीनियसली डेवलप्ड MIGM। MIGM क्या है? मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन को, एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड मतलब इंडिया में ही, मेक इन इंडिया के अंडर इसको यहाँ पे बनाया गया है एंड इसको अभी DRDO एंड इंडियन नेवी ने मिलकर टेस्ट किया। इसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स। इंडियन टेबल टेनिस ड्यूओ
इन्होंने अंडर 19 बॉयज़ की अगर हम बात करें, अंकुर भट्टाचार्य एंड अभिनंदन, इनके द्वारा मिलके इन दोनों कपल ने यहाँ पे अंडर 19 बॉयज़ डबल टाइटल को जीत लिया है एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर बैंकॉक 2025 में। यहीं पे अगर मैं अंडर 19 गर्ल्स की बात करूं तो इन्होंने यहाँ पे, इनके कपल ने यहाँ पे डबल्स में यहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल सिक्योर किया है। तो बॉयज़ ने गोल्ड, गर्ल्स ने सिल्वर। नेक्स्ट आ जाते हैं फुटबॉल क्लब गोवा, इन्होंने कलिंगा सुपर कप 2025 को जीती है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को फाइनल में हरा के बाय 3-0। फाइनल इवेंट कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में हमें देखने को मिला था, राइट। एंड ये फुटबॉल क्लब गोवा का सेकेंड टाइम विक्ट्री रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। डाइट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना कि ये कितनी डेडली भी हो सकती है, राइट। एंड ज़रूरी नहीं होता हर बॉडी गलत शेप में हो, अलग अलग बॉडी फिगर्स को, वेट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एंड फैट फोबिया से दूर रहना चाहिए, राइट। इसके लिए लाइट ब्लू रिबन ये आपका सिंबल है, ये मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे 6 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। जनरली इसको फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को ऑब्जर्व करते हैं एंड 2025 में ये इस बार 6 मई को हुआ। ये एक इनिशिएटिव है बेसिकली अस्थमा के पेशेंट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। इस साल 6 मई को था। इसकी एक थीम रहेगी मेक इनहेल ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। इसके बाद आ जाते हैं बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन डे, BRO डे हम ऑब्जर्व करते हैं 7 मई को, राइट। एंड बुयारो फोर्स की जो ये एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1960 में, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इस बार हमने 66th एडिशन इस डे का यहाँ पे ऑब्जर्व किया, BRO के कमेंसमेंट का। नेक्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, टू रेज अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन एंड यंग पीपल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड एंकरेज देम टू प्ले स्पोर्ट्स स्पेशली एथलेटिक्स। एंड एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी एक थीम रहेगी रिले अराउंड वर्ल्ड चैलेंज। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एंड देन वील प्रोसीड टू द होमवर्क सेक्शन। नेक्स्ट, हाउ मच लोन डिड क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया फ्रॉम IFC, जो कि एक वर्ल्ड बैंक का आर्म है, ताकि जो फाइनेंशियल एक्सेस है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स तक वो बढ़ा सके, मतलब ज़्यादा पैसे का एक्सेस उन तक पहुंचा सके। तो वो है $50 मिलियन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया RBI के द्वारा जनवरी 2025 में, टू इवेल्युएट ऑन टैप एप्लीकेशन अंडर द थीम ऑफ रिटेल पेमेंट्स, मतलब आप टैप करके वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो इनिशिएटिव था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स क्या होता है? बेसिकली एक इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई भी सर्विस एक जनरल पब्लिक तक लॉन्च करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है उस इन्वायरमेंट में, वो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता है। नेक्स्ट, इन फेब सेबी ने ग्रांट किया रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर्स लाइसेंस, किनको? मेकिंग इट द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर लेड कंपनी टू रिसीव द लाइसेंस। तो वो है द 1% क्लब, शरण हेगड़े की ये कंपनी रहेगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक्सटेंड किया 200 करोड़ रुपीज लोन टू ग्रामर्सी टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 120 मेगावाट डाटा सेंटर महाराष्ट्र में। तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक्सटेंड किया 200 करोड़ रुपीज़ का लोन, वो है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID। नेक्स्ट, इन फैब बीकॉन इन्होंने लॉन्च किया इंडिया बिल पे, जो कि एक सर्विस है जो अलाउ करेगी नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, जो कहाँ पर है, जो कनाडा में है, टू पे बिल्स डायरेक्टली इन इंडिया थ्रू बीकन मोबाइल एप्लीकेशन। तो मतलब कनाडा से बैठ के इंडिया के बिल्स वो पे कर सकेंगे। इसी के अलावा सिंगापुर में भी UPI यूज़ कर पाएंगे इंडियन ट्रैवलर्स। एंड इसके लिए सिंगापुर के हिट पे के साथ यहाँ पे टाई अप किया है किन्होंने? इंडिया के NIPL ने, जो कि है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने। नेक्स्ट, RBI ने भी रीवैल्यूएट किया था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये बढ़कर कितना हो गया? ये हो गया आपका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 465.33, रिफ्लेक्टिंग एन 11.11 ईयर ऑन ईयर इंक्रीज एज ऑफ September 24। नेक्स्ट, what are the new norms introduced by SEBI in Feb 25 to regulate the algorithmic trading for retail investors? ये कब से लागू हो जाएगी? एल्गो ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 1 अगस्त से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली सिक्योर 2424 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स? तो केरला के लिए यहाँ पे अप्रूव किया गया है ये लोन। नेक्स्ट, किस बैंक ने लॉन्च किया एक्सक्लूसिव सेट ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज स्पेसिफिकली फॉर सीनियर सिटीजन्स इन Feb 2025? तो वो है IDFC फर्स्ट बैंक।
नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कि लॉन्च किया गया बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, डिजाइंड एक्सक्लूसिवली टू कैटर द इवॉल्विंग हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ वीमेन, तो उसका नाम है हेरिजॉन केयर। नेक्स्ट, हाउ मच नेट प्रॉफिट दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्टेड तीसरे क्वार्टर में ऑफ FY25 मेकिंग एन इंक्रीज ऑफ 84.32%। तो कितना प्रॉफिट SBI ने यहाँ पे रजिस्टर किया, वो है 16,891 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे शो किया। नेक्स्ट, विच कंपनी इन्होंने लॉन्च किया न्यू फंड ऑफर्स इन फेब इंक्लूडिंग निफ्टी टोटल मार्केट ETF एंड निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी टोटल मार्केट टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ग्रांट किया एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर TPAP लाइसेंस rediff.com को इनकी पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए रेडिफ पे के लिए। तो किन्होंने इनको ये लाइसेंस दिया, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको ये ग्रांट किया गया थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस। नेक्स्ट, इन फरवरी RBI ने इम्पोज करी मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 27.3 लाख रुपीज़ किस पर, फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द RBI's डायरेक्शन ऑन इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड ओपनिंग सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स फॉर इनएलिजिबल एंटिटीज। तो किन पे ये पेनल्टी इम्पोज की गई है, फेडरल बैंक पे इम्पोज की गई है 27.3 लाख रुपए की। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सेबी टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रैक एंड रिक्लेम इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज। तो ये मित्रा है इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली ग्रांटेड अप्रूवल बाय RBI टू प्रोवाइड प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन्स थ्रू UPI। तो वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड फीचर of its kind feature recently launched by Axis Bank enabling customers to open them via mobile application। तो फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे लॉन्च किया गया जो कस्टमर मोबाइल एप्लीकेशन से ही यहाँ पे बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो किनको मिल गया ये अप्रूवल, वो है EasyBiz प्राइवेट लिमिटेड, ये अब ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम कर सकेंगे। नेक्स्ट, नेम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रहेगा, जिन्होंने रिसीव किया 2147.51 करोड़ रुपीज़ का टर्म लोन फ्रॉम REC लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड फॉर देयर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो वो पाकल डैम के लिए यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल जो मॉनिटर करेगा, एनालाइज करेगा RPTs को, एनहांस करेगा ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस कॉर्पोरेट इंडिया में। तो किसके द्वारा किया गया है ये, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन, वो है सेबी। नेक्स्ट, इन फरवरी डैश इन्होंने रिसीव किया रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम RBI टू इशू न्यू लोन्स एंड सस्पेंडेड डिपॉजिट विड्रॉल्स ड्यू टू द कंसर्न्स अबाउट देयर फाइनेंशियल पोजीशन। तो इन फरवरी न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड इन्होंने रिसीव की रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम RBI। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने ऑन विच RBI लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शंस, जिन्होंने अभी रिस्ट्रिक्शंस हटा लिया RBI ने, किस बैंक पे से, तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड से यहाँ पे इन्होंने जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा लिए। नेक्स्ट, जूलिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेज देयर स्टेक टू 7%, किसमें, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पे अपना स्टेक रेज करने की बात की गई। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इन्वेस्ट किए 850 करोड़ रुपए इन इंडिया की पहले सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड में इन द रोड सेक्टर इन फैब इशूड बाय क्यूब हाईवेज ट्रस्ट, राइट। तो किसके द्वारा ये इन्वेस्ट किए गए हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि एक वर्ल्ड बैंक का आर्म ही रहेगा। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिन्होंने रिसेंटली सिक्योर किया $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम एक्सिम बैंक फॉर परचेजिंग हाई स्पीड बोट्स एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। तो वियतनाम के द्वारा यहाँ पे सिक्योर किया गया ये $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट, किस फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला फुल्ली कंप्लेंट सेल्फ होस्टेड KYC सॉल्यूशंस को, तो ये है डिसेंट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड लीडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म रहेगा। नेक्स्ट, नेम द न्यू डिजिटल सर्विस लॉन्च की गई साउथ इंडियन बैंक के द्वारा फरवरी 2025 में जो अलाउ करेगी इंडिविजुअल्स को टू ओपन फिक्स डिपॉजिट विदाउट अ सेविंग अकाउंट। तो ये है SIB क्विक फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव जो इंट्रोड्यूस किया गया बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 9th एडिशन ऑफ बीमा मंथन जो एनहेंस करेगा असेसिबिलिटी को, अफोर्डेबिलिटी को एंड एफिशिएंसी को इन द इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया। तो ये है बीमा ट्रिनिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन विल सेबी, इन्होंने न्यू डिस्क्लोजर रूल्स लॉन्च किए फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये लागू होंगे। तो ये
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए जो नए रूल हैं 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय LIC इन फेब 2025, जो एम्पावर करेगा अपने एजेंट्स को एंड सेल्स एसोसिएट्स को, तो वो है वन मैन ऑफिस। नेक्स्ट, उस डिनोमिनेशन का नाम बताओ ऑफ द कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च बाय कर्नाटका बैंक लिमिटेड ऑन 101st फाउंडर्स डे इन फेब 2025, तो वो है 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन। नेक्स्ट, नेम द न्यू पेमेंट मैकेनिज्म जो कि इंट्रोड्यूस किया गया IRDAI के द्वारा, अलाउइंग वन टाइम मैंडेट ऑन UPI फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, तो वो है बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट्स, तो बीमा ASBA। नेक्स्ट, विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक इन्होंने लॉन्च किया प्रोस्पेरा नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया फरवरी 2025 में, तो वो है फेडरल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI डाटा, आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर द लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम डिक्लाइन बाय 10.15% ईयर ऑन ईयर टू व्हाट अमाउंट ड्यूरिंग द 9 months ऑफ FY25, तो वो है $22.82 बिलियन। नेक्स्ट आ जाते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग द गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, इन्होंने एक रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशन साइन किया है फॉर 4-year टेक्निकल कॉपरेशन प्रोजेक्ट इन फेब 2025, किसके साथ ये किया गया, जीका के साथ, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, टू एनहेंस द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अब रिवीजन पार्ट पे आ जाते हैं जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, एक होमवर्क देता हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे कमेंट चाहिए। Next students, let's move to the homework section. First question, tell me recently which is the first state to subcategorize the SC category. It was categorized into 3 groups. Name that groups and their criteria also. Second question, recently Bhu Bharti portal. Bhu Bharti portal. This Bhu Bharti portal was launched by and launched by which state government? Third question, tell me recently which Indian Institute of Management or which Indian Institute of Management has opened their campus in Dubai recently. Also tell me if there is an IIT that has also opened in Dubai. It is not recent news but still you should know. Fourth question, world's best airport. Name the world's best airport and also the rank of Indian airports in this list. Fifth question, tell me recently about International Solar Alliance, how many members are there and who was the recent joining. So that's all for the day students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video in the homework, right? Maximum to maximum comments I want.